growing inequality and pervasive poverty further lock countries into the cycle of higher population growth rates and increasing climate vulnerabilities. Some recent studies have inverted this proposition. Without reducing social and economic inequalities, the population growth rate cannot be slowed down, nor can climate vulnerabilities be reduced. Climate justice, therefore, rests on inclusion and equity in order to manage the population growth rate, demographic trends, and the sustainability of economic growth, besides achieving net zero emissions. Dennis Meadows' The Limits to Growth, released in 1972 by the Club of Rome, instantly became a controversial and influential book in environmentalism. Based on systems thinking, it drew attention to population and economic growth as the twin global challenges to sustainability. By integrating 5 elements: population, consumption of non-renewable natural resources, food production, industrialization, and pollution, the book argued that humankind was exceeding Earth's carrying capacity. It espoused a neo-Malthusian agenda of limiting population growth and promoting sustainable economic development for life on the planet beyond 2100. Since then, per capita GDP and population growth have remained the strongest drivers of carbon emissions. The 6th Assessment Report of IPCC, released in 2022, has specifically identified high population growth as a key impediment to reaching the critical target of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels. Research examining the effects of different population projections on economic growth and energy use shows that reining in population growth and reducing reliance on fossil fuels can significantly decrease greenhouse gas emissions. Incorporating various population projections in climate models shows that higher population growth rates lead to higher carbon emissions. It has been projected that slower population growth could lower emissions from 2.5 billion tons to 1.6 billion tons per year by 2050. It has also been argued that by 2100, these reductions could possibly reduce emissions by 37 to 41%. It would also cost considerably less than the technological investments required to combat climate change. Reducing the population growth rate alone will not solve the climate problem. Yet, it must also be recognized that the population growth rate is only one of multiple drivers. Reducing the growth rate alone will not solve the climate problem. Multiple factors contribute to climatic changes, and multiple actions are needed to address them. In other words, even if Pakistan were to become a net zero emitter, it would not become climate secure unless twinned with regenerating ecosystems. Population planning can help boost resilience and the effectiveness of other interventions. Above all, a robust population policy can empower people, especially women, and help improve lives that can make other actions far more effective. Further, temperature rises will adversely impact everyone, as every additional person increases carbon emissions, albeit the rich far more than the poor. It will also increase the number of climate change victims, with the poor far exceeding the rich. A recent Oxfam study based on a survey of 125 billionaires has found that each billionaire was responsible for the annual emission of about 3 million metric tons of CO2, i.e., over 1 million times the amount emitted by 90% of the people. The report also estimated that 70% of their emissions stemmed from their investments in 183 corporations, with a combined corporate equity value of $2.4 trillion. The study posits that extreme inequality and wealth concentration undermine the ability of humanity to stop climate breakdown. Building on the legacy of limits to growth, the Club of Rome and several European think tanks have developed an intricate model, Earth for All, to explore 2 possible scenarios this century. These combine environmental, economic, and social factors, including food production, income, taxes, energy, and inequality. First, there is the too little too late scenario that represents the current incremental changes. Second is the giant leap scenario, indicating a global population drop to 6 billion from the UN projected 11.2 billion if sustained investments are made in education and healthcare, along with transformative policy changes in food and energy security, inequality, and gender equity.
With China, India and Bangladesh effectively curbing their population curves, attention is shifting towards Pakistan, a country of an estimated 487 million by 2100. As Afghanistan and Pakistan are holding the world hostage on polio, Pakistan may become the ultimate roadblocker on curbing the global population growth rate. 50 years after Limits to Growth was printed, Pakistan has emerged as a textbook case on all 5 elements that were at the heart of the study. The population has increased 4 times, from 62 million in 1972 to 234 million today. The rate of return on agricultural inputs has been declining, making several crops less viable. Plateauing soil productivity, loss of nutritional yield value and depletion of groundwater, forests and other resources have adversely affected the physical environment, eroded the carrying capacity of ecosystems and increased exposure to climate-induced disasters. It has also accelerated outward migration to cities, making Pakistan the most urbanized country in South Asia. Finally, urbanization and migration are the key drivers of Pakistan's population dynamics and are central to discussions on climate risks, especially in the context of migration to urban and peri-urban areas. People migrate to unwelcoming and ill-prepared urban centers like Karachi, where they can only afford low-lying, flood-prone and marginal land, thus increasing their exposure to urban climate change risks. It is estimated that in Karachi, 64% of the population lives in informal settlements. The deficient provision of basic services weakens their capacity to adapt to climate change, resulting in victim blaming of the poor since internally displaced migrants have a higher carbon footprint in an urban setting than they had in the rural areas before they migrated. Once in cities, their resilience level diminishes as they have fewer resources to cope with the adverse impacts of climate-induced hazards. The giant leap scenario of Earth for All has lent support to voices from the Global South calling for cancellation of debt, reducing world inequality by raising carbon taxes on richer people and corporations, and decreasing hunger and poverty by respecting the carrying capacity of our ecosystems. The first step, as always, is preparing for equitable local governance. The writer is an expert on climate change and development. Published in Dawn, April 20, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. बढ़ती हुई अदम मुसावात और वसी पैमाने पर गुर्बत ने ममालिक को आबादी में इजाफे की बुलंद शरह और बढ़ती हुई आबो हवा की कमजोरियों के चक्कर में मजीद फंसा दिया है। कुछ हालिया मुतालियात ने इस तजवीज़ को उलट दिया है, समाजी और मुआशी अदम मुसावात को कम किए बगैर आबादी में इजाफे की शरह को सुस्त नहीं किया जा सकता है और न ही आबो हवा की कमजोरियों को कम किया जा सकता है। लिहाजा आबो हवा के हवाले से इंसाफ आबादी में इजाफे की शरह, आबादियाती रुझानात और मुआशी तरक्की की पायदारी को मुनज़्ज़म करने के लिए शमूलियत और मुसावात पर मुनहसर है। 1972 में क्लब अफरूम की जानिब से जारी होने वाली डिनीस मीडोज की दी लिम्स टू ग्रोथ फौरी तौर पर माहौलियात में एक मुतनाज़ा और बासर किताब बन गए। निज़ाम की सोच की बुनियाद पर उसने आबादी और मुआशी तरक्की को इस्तेहकाम के लिए जुड़वां आलमी चैलेंजों के तौर पर तवज्जो मबजूल कराए। आबादी, गैर काबिल तजदीद कुदरती वसाइल की खपत, खुराक की पैदावार, सनतकारी और आलूदगी जैसे 5 अनासिर को यकजा करके किताब में दलील दी गई है कि इंसान ज़मीन की गुंजाइश से तजावुज़ कर रहा है। इसने आबादी में इजाफे को महदूद करने और 2100 के बाद कुरा अर्ज़ पर ज़िंदगी के लिए पायदार इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के न्यू माल्थूसियाई एजेंडे की हिमायत की। इसके बाद से फ़ीकस जीडीपी और आबादी में इजाफा कार्बन के इखराज के सबसे मजबूत मुहर्रिक रहे हैं। 2022 में जारी आईपीसीसी की छठी तशख़ीसी रिपोर्ट में ख़ास तौर पर आबादी में इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग को सनती सतह से पहले की सतह से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखने के अहम हदफ तक पहुँचने में एक अहम रुकावट के तौर पर निशानदेही की गई है। माशी तरक्की और तवानाई के इस्तेमाल पर आबादी के मुख्तलिफ तखमीनों के असरात का जायज़ा लेने वाली तहक़ीक़ से पता चलता है कि आबादी में इजाफे पर काबू पाने और फोसिल ईंधन पर इन्हिसार को कम करने से ग्रीन हाउस गैसों के इखराज को नुमायां तौर पर कम किया जा सकता है।
आब हुआ के नमूनों में आबादी के मुख्तलिफ तखमीनों को शामिल करने से पता चलता है कि आबादी में इजाफे की ज्यादा शरह कार्बन के अखराज का बाइस बनती है। ये अंदाजा लगाया गया है कि आबादी में सुस्त इजाफे से 2050 तक अखराज को 2.5 बिलियन टन से कम करके 1.6 बिलियन टन सालाना किया जा सकता है। ये भी दलील दी गई है कि 2100 तक ये कमी मुमकिना तौर पर अखराज को 37-41% तक कम कर सकती है। इसकी लागत आब हुआ की तब्दीली का मुकाबला करने के लिए दरकार तकनीकी सरमायाकारी से भी काफी कम होगी। सिर्फ आबादी में इजाफे की शरह को कम करने से आब हुआ का मसला हल नहीं होगा। फिर भी ये भी तस्लीम किया जाना चाहिए कि आबादी में इजाफे की शरह सिर्फ मुतअद्दिद मुहर्रिकात में से एक है। सिर्फ तरक्की की शरह को कम करने से आब हुआ का मसला हल नहीं होगा। मुतअद्दिद अवामिल आब हुआ की तब्दीलियों में किरदार अदा करते हैं और उनसे निपटने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात की ज़रूरत है। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर पाकिस्तान नेट ज़ीरो इखराज करने वाला मुल्क बन भी जाता है, तब तक ये आब हुआ के लिहाज से महफूज नहीं होगा जब तक कि उसे दोबारा पैदा करने वाले माहौलियाती निज़ाम के साथ मुंसलिक न किया जाए। आबादी की मंसूबाबंदी लचक और दीगर मुदाखलतों की तासीर को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सबसे बढ़कर आबादी की एक मजबूत पॉलिसी लोगों, खास तौर पर ख्वातीन को बाइख्तियार बना सकती है और जिंदगियों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, जो दीगर इक़दामात को कहीं ज्यादा मुअस्सर बना सकती है। मजीद बरा दर्जा हरारत में इजाफा हर एक पर मनफी असर डालेगा, क्योंकि हर इजाफी शख्स कार्बन के इखराज में इजाफा करता है, अगरचे अमीर गरीबों से कहीं ज्यादा है। इससे मौसमियाती तब्दीली के मुतासरीन की तादाद में भी इजाफा होगा, जिसमें गरीब अमीरों से कहीं ज्यादा होंगे। 125 अरबपति अफराद के सर्वे पर मबनी ऑक्सफैम की एक हालिया तहकीक में ये बात सामने आई है कि हर अरबपति तकरीबन 30 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के सालाना इखराज का जिम्मेदार है, यानी 90% लोगों की तरफ से भेजी जाने वाली रकम से 10 लाख गुना ज्यादा। रिपोर्ट में ये भी अंदाजा लगाया गया है कि उनके इखराज का 50 से 70% हिस्सा 183 कारपोरेशनों में उनकी सरमायाकारी से पैदा हुआ, जिसकी मुश्तरका कारपोरेट इक्विटी वैल्यू $2.4 ट्रिलियन है। मुताले में कहा गया है कि इंतहाई अदम मसावात और दौलत का इर्तिकाज आब हुआ की टूटने को रोकने की इंसानियत की सलाहियत को कमजोर करता है। तरक्की की हुदूद की विरासत की बुनियाद पर क्लब ऑफ रोम और मुतअद्दिद यूरोपीय थिंक टैंक्स ने इस सदी में 2 मुमकिना मंजरनामे तलाश करने के लिए एक पेचीदा मॉडल अर्थ-चार्ट तैयार किया है। ये माहौलियाती, इक्तिसादी और समाजी अवामिल को यकजा करते हैं, बशमूल खुराक की पैदावार, आमदनी, टैक्स, तवानाई और अदम मुसावात। सबसे पहले बहुत देर से मंजरनामा है जो मौजूदा बढ़ती हुई तब्दीलियों की नुमाइंदगी करता है। दूसरा मंजरनामा बड़ी छलांग का मंजरनामा है, जिससे जाहिर होता है कि अगर तालीम और सेहत की देखभाल में पायदार सरमायाकारी की जाती है तो आलमी आबादी अक़वाम मुत्तहिदा के तखमीना 11.2 अरब से घटकर 6 अरब रह जाएगी। चीन, भारत और बांग्लादेश की जानिब से अपनी आबादी पर काबू पाने के बाद अब तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल हो रही है, जो 2100 तक एक अंदाजे के मुताबिक 48 करोड़ 70 लाख आबादी वाला मुल्क है। चूंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने दुनिया को पोलियो पर यरगमाल बना रखा है, पाकिस्तान आलमी आबादी में इजाफे की शरह को रोकने में आखिरी रुकावट बन सकता है। तरक्की की हुदूद की इशाअत के 50 साल बाद पाकिस्तान इन तमाम 5 अनासिर पर एक निसाबी केस के तौर पर उभरा है, जो मुताला के मरकज में थे। आबादी 1972 में 62 मिलियन से 4 गुना बढ़कर आज 234 मिलियन हो गई है। ज़री इनपुट्स पर मुनाफा की शरह कम हो रही है, जिसकी वजह से कई फसलें कम काबिल अमल हो रही हैं। मिट्टी की पैदावार में कमी, ग़िज़ाई तग़ज़िया की कीमत में कमी और ज़ेर ज़मीन पानी, जंगलात और दीगर वसाइल की कमी ने जिस्मानी माहौल को बुरी तरह मुतासिर किया है, माहौलियाती निज़ाम की नक़्लो हमल की सलाहियत को ख़त्म कर दिया है और आब हुआ से पैदा होने वाली आफात का सामना करना पड़ा है। उसने शहरों की तरफ बैरूनी नकल मकानी को भी तेज़ कर दिया है, जिससे पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा शहरी मुल्क बन गया है। आखिर में शहरकारी और नकल मकानी पाकिस्तान की आबादी की हरकियात के अहम मुहर्रिक हैं और आब हुआ के खतरात पर बहस में मरकजी हैसियत रखते हैं, खास तौर पर शहरी और नीम शहरी इलाकों की तरफ नकल मकानी के तनाजुर में।
लोग कराची जैसे गैर सेहतमंद और गैर तैयार शहरी मराकज़ की तरफ हिजरत करते हैं, जहां वो सिर्फ निशेबी, सैलाबज़दा और मामूली ज़मीन खरीद सकते हैं। इस तरह शहरी आबोहवा की तब्दीली के खतरात में इजाफा होता है। एक अंदाजे के मुताबिक कराची की 66% आबादी गैर रस्मी बस्तियों में रहती है। बुनियादी खिदमात की नाकिस फराहमी उनकी आबोहवा की तब्दीली के मुताबिक ढलने की सलाहियत को कमज़ोर करती है, जिसके नतीजे में गरीबों को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले तारकीन वतन में नक़ल मकानी से पहले देही इलाकों के मुकाबले में शहरी माहौल में कार्बन का इखराज ज़्यादा होता है। एक बार शहरों में पहुंचने के बाद उनकी लचक की सतह कम हो जाती है, क्योंकि उनके पास आबोहवा से पैदा होने वाले खतरात के मनफी असरात से निमटने के लिए कम वसाइल होते हैं। अर्थ फॉरल के देओकामत छलांग मंजरनामे ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ों की हिमायत की है, जिसमें कर्जों की मनसूखी, अमीर लोगों और कारपोरेशनों पर कार्बन टैक्स बढ़ाकर आलमी अदम मुसावात को कम करने और हमारे माहौलियाती निज़ाम की गुंजाइश का एहतराम करते हुए भूख और गुर्बत को कम करने का मुतालबा किया गया है। पहला कदम, हमेशा की तरह, मसावी मकामी हुक्मरानी की तैयारी है। मज़मून निगार आबोहवा की तब्दीली और तरक्की के माहिर हैं। अखज़ शदा बतारीख 20 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.